Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students, dear viewers. I hope you are doing great by the grace of God Almighty. We are on with our course, and I hope that you are enjoying thoroughly all the lessons that are coming to you each day. And it is obviously a variety of things that you are now seeing every day coming to you. In fact, I have decided that we bring in diversity in terms of the delivery of lessons, the concepts, the topics. If we get started with the lesson and then we have a poem, we follow it up with a writing skill and grammar, so the circle will be completed. So instead of going for lessons every day, I have thought that it's better that we have a lesson, and then we have a poem, and then we have a writing skill, and then we have a grammar. Now, as you know, that we have already had a lesson and a poem from the syllabus, it's now time for us to go for a writing skill. And this falls within section A of your paper, and it is note making. Dear friends, this is note making for you, and you will have 5 marks for the examination when it comes to note making skill. So today we shall be taking up the main characteristics, the main fundamental features of note making. Before we start note making technique and the way we make notes, why do we make notes? This is one question that must be cropping up in your minds. Why do we make notes? In fact, many of you must have heard that notes are important for examination. Which type of notes are you studying? Have you made the notes on the notebooks? Which notes have you got copied? Where from have you got? What is the source of these notes? Who has compiled these notes? These are the questions that come back and forth, all directions, all across. You come to know. In fact, you start thinking about these things. But the question is that why do we make notes? This is question number 1 that I'll try to answer. And question number 2, what is the difference between note making and note taking? Do we make notes or do we take notes? And these 2 questions we'll have the answers of, and it will be followed up with the main characteristics and the techniques of note making. What all do we need to keep in mind when it comes to making notes, and how can you have these 5 marks done correctly for the examination? So first question is what are notes, and why do we make notes? In fact, notes are a concise account, a brief account, a limited account of a huge chunk of information. When you have a big piece of information, you have got a lot of information, and then it is hard for you to remember each and every detail of that information. What do? You break it down, this complex structure, you break it down into simpler units, and those concise, simple, palatable, digestible bits of information you put together in the form of a note. So what does it do? It does one beautiful thing for the student. It helps the student to revise the information, especially when it comes to examination. जब आप एक नोट बनाते हैं तो एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन ट्रेजरी याद रखना, उसके तमाम नट्स एंड बोल्ट्स पे नज़र रखना मुश्किल हो जाता है. Therefore, when you have bits and pieces of information in the form of fragments, in the form of small capsules, in the form of small points, तो आपके लिए आसान हो जाता है उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, उस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना,
उस इंफॉर्मेशन को accommodate करना, and that paves the way for a smooth sailing when it comes to examination. So you must have seen that what does the note maker do. नोट मेकर कोशिश करता है कि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ पेजेस पे जो समेटी गई है, उस इंफॉर्मेशन से मैं जिस निकालूं, आइडियाज़ निकालूं, मेन इंफॉर्मेशन निकालूं, मेन चंक्स निकालूं, बेयर बोन्स निकालूं, मेन चीज़ें जो है जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसकी है उसको मैं निकालूं. He wants to extract the juice out of those pages, and then he puts them across, expresses them in the form of small points, short expressions, and those short expressions are present in the form of a note, and that is why it becomes easier for you when you start preparing for an examination. So आपको पता चल गया होगा कि नोट क्यों बनाए जाते हैं, because it saves your time, it saves your energy, and more importantly, it helps you retain valuable and meaningful information so that your examination 3 hours become productive 3 hours, and you can translate and reproduce all the information that you have had discussed, or rather you have had learnt and revised from the notes, so that it becomes easier for you to elaborate and express them in a free way as per the demand of the examination and those questions that you see confronting the examination. So that's point one. Number two, what is the difference between making a note and taking a note? Remember, there are two concepts. One is note making, और दूसरा कॉन्सेप्ट है नोट टेकिंग. रफ नोटबुक्स अपने साथ रखें और बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज दीज आर द एग्जामिनेशन फेवरेट्स. ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कल, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू नो द टेक्निक, द फॉर्मेट, ऑब्वियसली these 5 marks will be going straight away into your pockets. So when we talk of note making, it's called reading comprehension. In fact, जो हमारा section 1 है, it's based on reading. Therefore, it tests your reading comprehension. And when we talk of note making, it is the listening comprehension. ये मैंने introductory lesson में भी बताया था आपको कि there are 2 types of comprehensions. Number 1, reading and listening. When you make notes considering the reading of a passage or an extract, आपके पास एक passage रहता है और उसके बाद आप उसको पढ़ के उससे नोट्स बनाते हैं, तो दैट बिकम्स नोट मेकिंग. और जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप पढ़ के नहीं बल्कि सुन के छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, छोटे छोटे यूनिट्स में उसको ब्रेकअप करते हैं, फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप करते हैं, एट दैट टाइम we call that note taking. And as I've already said earlier also, that note taking is normally done by the scribes, the journalists, when they attend a press conference wherein you have got celebrities or you have got politicians, you have got bureaucrats speaking about a topic and then answering the questions, and then these journalists with a shorthand mechanism, they jot down those important points in order to make newspaper stories. Therefore, that is where we say notes have been taken. But आपके examination में, it's not the taking of the note that is going to be examined, it is the making of the note that's going to be examined. So आपके examination में क्या होगा? You will be given a passage. एक 200-250 worded passage होगा, unseen passage होगा, और आपसे बताया जाएगा कि make notes from the following passage. So what should be the way forward? क्या techniques, क्या fundamental features हैं इस note के जो आपको ख्याल में रखने हैं? सबसे पहली बात जो है, you have to read the given passage carefully. So here is where students need to understand that nothing is going to be possible if you don't have a reading under your control. Reading is inevitable. Reading is indispensable. It is absolutely, necessary for you.
इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल, आपको रीड करना पड़ेगा। दो किस्म के रीडर्स होते हैं, एक वो रीडर होता है जो ऑलरेडी यूज्ड टू रीडिंग होता है, देयरफॉर that student does not take much time in understanding the nitty-gritty of the passage. That reader does not take much time in understanding the key concepts that are present in the passage. But there's another reader who is not that great in terms of reading skill, and he has poor vocabulary, and he does not have full control over expressions of English and the phrases that are used there and the concepts, and all the ideas. He's not able to integrate the ideas, he's not able to analyze the ideas. उस बच्चे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि he goes or she goes for reading twice or even thrice, because you may not be able to understand each word from the passage, because it's not necessary that every word or every phrase you must be knowing the meaning of. ये जरूरी नहीं है कि पैसेज का हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन, हर सेंटेंस आपको समझ आ जाए, लेकिन पैसेज पढ़ के आप इन्फर कर सकते हैं। इन्फर करने का मतलब आप पैसेज के 70% को भी अगर कामयाब हो गए समझने में, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं पैसेज के रिलेटेड वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास 4 सेंटेंस हैं, 2 आपको समझ आ गए, उन 2 की मदद से आप दूसरे वाले 2 जो हैं, जो आप नहीं समझ पाए, उनकी मीनिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय गेस वर्क, स्मार्ट वर्क जो पैसेज में आपको करनी पड़ेगी। If you understand the passage thoroughly, if the sentences are clear to you, if the vocabulary is clear to you, then it's well and good. Then nothing like that. If you feel कि हमें सारा समझ नहीं आ रहा है पैसेज, जितना आपको समझ आ रहा है आफ्टर रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, उस समझे हुए पार्ट की मदद से आप जो पार्ट आपने नहीं समझा, जिसको आप समझने से कासिर हैं, जिसको आप समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको एक गैस वर्क बनाना पड़ेगा, कैलकुलेटेड गैस वर्क बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द पैसेज। सो once you get the key words of the passage, as you see, read the passage carefully and you have to find the caption, you have to find the title of the passage. तो इस पैसेज का टाइटल जो है, टाइटल के बारे में मोस्टली इट हैज बीन फाउंड 70% ऑफ द पैसेजेस आर दोज पैसेजेस जिनका टाइटल पहली ही इनिशियल लाइंस में छुपा होता है। दैट मीन्स once you start reading the passage, once you start reading the first 3-4 lines, आपको पहली ही 2-4 लाइंस में इशारा मिलेगा कि ये पैसेज किस चीज के बारे में मौजूद है, ये पैसेज किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ये पैसेज किस टॉपिक के ऊपर जो है ये लिखा गया है। दैट इज द फर्स्ट 4 लाइंस। देयर आर 20% चांसेस दैट द टाइटल ऑफ द पैसेज मे बी प्रेजेंट in the middle part of the passage somewhere, and there are 10% meager chances जहाँ पे टाइटल आपको लास्ट की लाइन में मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम पैसेज में देखा गया है दैट टाइटल्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। सो यू हैव टू फाइंड द टाइटल, बिकॉज एक नोट बनाने के लिए you need to know the heading, you need to know the subheadings, you need to know the subheadings. जैसे आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में shells, subshells, subshells. So same happens with a passage. समझ लीजिए एक बड़ा सब बिल्डिंग और उसके बाद उस बिल्डिंग के जो क्वार्टर्स हैं और उसके बाद उन क्वार्टर्स के कमरे और उनके सेपरेट कैबिन्स। मान लीजिए बिल्डिंग इज द हेडिंग, उसके जो कंपार्टमेंट्स हैं दे आर द सब शेल्स, दे आर द सब हेडिंग्स, और उन कंपार्टमेंट्स में जो फिर छोटे छोटे कमरे और कैबिन्स हैं दे आर द सब शेल्स। स्कूल या कॉलेज दैट विल बी द हेडिंग, library, laboratory, these will be the subheadings of that school, and then books, equipment in that laboratory, that will be the subheading. So you have to understand which is the bigger unit, that will obviously be the heading of it. उस बिगर यूनिट के नीचे कौन सी सेकेंड लेवल है जिसको आप सब हेडिंग बोलेंगे, और उसके नीचे जो है अगर कुछ है उनको आप सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू
do it? How will you find the title? Reading will be the key. Read the given passage carefully to create the headings, subheadings, and if there are needs of subheadings also, you can create that as well. Depends on the passage. Passage के contents आपको बताएंगे कि क्या मुझ में subheadings ढूंढने की जरूरत है, subheadings ढूंढने की जरूरत है. Obviously that is dependent on the contents of the passage. This दूसरी बात जो important है, passage जो है इसके keywords जो है और expression जो है ये आपको underline करने पड़ेंगे, because the nitty-gritty of this note making is that you have to squeeze the orange and you have to take the juice out. और इस orange का juice जो है that is ultimately hidden in these keywords. Keywords, key expressions. Suppose I'm talking of William Shakespeare. The line is like this: William Shakespeare, the Bard of Avon, was the most famous dramatist of England. He was born at a place called Stratford-at-Avon in the year 1560. He was a famous playwright who wrote wonderful comedies and mesmerizing tragedies. He was a sonneteer also, whose sonnets were amazingly beautiful and beautifully universal. So if these are the lines in a passage, what is the meaningful information? The meaningful information is, where was Shakespeare born? That is meaningful information that can be underlined. What is Shakespeare by occupation or by designation? Obviously dramatist. What has he been over the years? He has been a dramatist, a playwright, he has been a sonneteer. And where was he born? That is Stratford-at-Avon. What is the sobriquet? What is the name, another name, the title name that people give him? That is Bard of Avon. These are important information pieces that we have to understand and underline. So this is how I want to explain you the concept of keywords. ये हो गया keyword, main information, जिसको आप बोलते हैं bare bones, जिसको आप जब आप गोश्त लाते हैं घर के लिए तो हड्डियां जो है हम कोशिश करते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम खाते नहीं हैं, जो मेन चीज़ नहीं है, वो हम जो है वो हम सेपरेट करते हैं, and we take the main thing for the dinner, for the cooking purposes. Therefore main चीज़ जो है that you have to find, and that is going to be present in the form of keywords or key expressions. Now while you are having the note of a particular passage, please don't feel कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस पैसेज के कुछ इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल सेंटेंसेस उठाते हैं और उनको 1 2 3 4 5 6 या उनको बुलेट पॉइंट्स में लिख के बोलते हैं कि हमने भाई नोट लिखा, विच इज नॉट करेक्ट. रिमेंबर, नोट में आपको वो पैसेज की लाइंस बिल्कुल बनफ्स नफीस आपको रिप्रोड्यूस नहीं करनी है, उनसे कोई मार्क नहीं मिलेगा. You have to create a heading or a subheading. अब आप पूछेंगे सर हम कैसे ये क्रिएट करें. सपोज वहां पे लिखा है शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड एट एवन इन इंग्लैंड. सो हेडिंग जो बन जाएगी वो बन जाएगी बर्थ प्लेस कोलन. His father is 75 years old. What will be the heading of it? My grandfather is 75 years old. The heading will be age 75 YRS. Now you will be seeing that I am writing 75 YRS. YRS ने आपको क्या idea दिया कि we can use contracted forms, we can use acceptable abbreviations also, we can use some good punctuation marks also after those headings and subheadings. The library contains 20,000 books on art, literature, science and varied disciplines of knowledge. So obviously you can create number of books.
colon 20,000 in the brackets parenthesis art, literature LIT, science SC, and all disciplines. So what you can do is you can make it concise, you can make it contracted with the help of good abbreviations, also with the help of good short forms. And that is what you are writing. Suppose government, you can write GOVT. You are writing etc., you can write ETC. You are writing for example, you can write EG. By the way, for your information, EG जो है, EG is a Latin expression which means in Greek it is exempli gratia. But this is Greek. When you translate this into English, it means for example. कुछ बच्चे क्या करते हैं? They write for EG, which is kish of English, which is absolutely wrong. You cannot take tea as well as coffee together. Either take tea or take coffee. Either be Greek and say EG, or be English and write FOREXAMPLE. So writing for example, FOR from English and E.G from Latin does not make any sense. Or Kashmiris are very interesting people. They say EG means example given, which unfortunately is not the case. They do it with the RSVP also. RSVP जो है, जो invitation cards पे नीचे लिखा होता है, they say in Kashmiri as a fun way, Ruju Sari Wirpet, which is not the case. It's not Ruju Sari Wirpet. It is Ripondes Sil Wow Plate. Ripondes. This is French. Sil Wow Plate. And in English it means please reply. Whether you are coming to attend the wedding, to attend the party or not. And underneath there are phone numbers. आपने देखा होगा हम लिखते हैं best wishes from near ones and dear ones. हम in fact लिखते हैं nears and dears, which also is wrong. It's not nears and dears, it is near ones and dear ones. Adjectives do not have any plurals. Nouns have plurals. Therefore, RSVP, Ripondes Sil Wow Plate. ये ज़िम्नन ही आ गई ये बात. छोटी छोटी expressions का use किया जा सकता है. ETC, Viz, similarly EG, government, GOVT, registered, REGD. And similarly, you can use mathematical symbols also, like greater than, lesser than, equal to, some punctuation marks also. feet के बदले FT लिखा जा सकता है. dimensions अगर दिखाने हो तो multiplication sign का use किया जा सकता है. 50 into 10 FT. तो ऐसी चीजें जो है वो create की जा सकती है, just to make it short and concise, to the point, so that information जो है वो सीधे अल्फाज में, सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में दिमाग में बैठ जाए. और जब इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना पड़े एग्जामिनेशन हॉल में, जब इस इंफॉर्मेशन को इलाबोरेट करना पड़े एग्जामिनेशन हॉल में, उस वक्त जो है ये बिट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उन बिट्स को हम निकाल के एक्सप्लेन कर सकें कंफर्टेबली. रिटेंशन बढ़ जाता है जब छोटी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज डिस्कशन में हो जाती है. रिटेन करना आसान हो जाता है. इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग पेजेस टुगेदर, यू कैन रिमेंबर पॉइंट्स. एंड एग्जाम में आप अक्सर बोलते हैं किसी को कि मुझे 2 पॉइंट्स बताओ या 1 पॉइंट बताओ. वंस आपको वो पॉइंट मिल जाता है, पुरहू में शिकवे से जैसे राग से बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए होता है क्या. once you get that 1 point or 2 points which you have forgotten for one reason or the other, then you tell that person, please now keep quiet, now I know how the way is to be found. So acceptable abbreviations can be used when we talk of note making. Long sentences to be avoided. Long sentence के बदले you can use fragments, यानी कि short expressions. जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने लिखा एज, माई फादर इज 75 years old. My father is 75 years old. These are 6 words. हमने इसको स्क्वीज कर दिया. एज हेडिंग बनाई, कोलन लगाया, 75 YRS. Shakespeare was born in the year 1560 and he died in the year 1616.
if I have to concise this, rather make it brief, I can write Shakespeare, William Shakespeare on top, birthplace. I have written straightforward Evan, and then we can write in the brackets 1564 dash 1616. This is the date of birth, year of birth, and this is the year of death. As you see normally in English text, बीच में hyphen डैश डालते हैं, लेफ्ट साइड से हम पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में लिखते हैं ईयर ऑफ बर्थ, और यहाँ से लिखते हैं ईयर ऑफ डेथ. सो यू कैन lessen the complicacies and complexities by using bits of information, by using to the point information. So with the help of good punctuation marks, with the help of good fragments and bits of information that you can use. Now आप इनको कैसे करेंगे? How will you sequence them? You have to organize these bits of information. हेडिंग आएगा, कैप्शन ऊपर, उसके बाद जो है वो नीचे आ जाएगी सब हेडिंग्स, उसके बाद सब हेडिंग से यू कैन हैव योर नंबरिंग. यू कैन स्टार्ट विद ए बी सी डी, अल्फाबेटिकल नंबरिंग होगी. अल्फाबेटिकल अगर आप यूज करेंगे हेडिंग्स के लिए तो सब हेडिंग्स के लिए करेंगे 1 2 3, और सब हेडिंग्स के लिए करेंगे व्हाट्स कॉल्ड द रोमन, स्मॉल रोमन अल्फाबेट. इट डिपेंड्स ऑन योर थिंग कि हाउ डज द नोट गेट ऑर्गेनाइज्ड, कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आप पॉइंट्स में इसको डिवाइड करेंगे. एंड द फोर्थ पॉइंट इज यू हैव टू बी completely specific and clear. You cannot beat about the bush. Please don't read or write anything which is not from the passage. Please don't elaborate. Please don't explain. Hit the nail on its head. बिल्कुल पत्ते की बात करनी है, पत्ते की बात लिखनी है. Unnecessary information, as I told you, संतरे से जूस निकालना है, जो उसका छुछुर है, जो बच जाता है, that has to be sent to the dustbin of history. That is not required at all. मेन चीजें जिस जो है, जो लुबाब है, वो आपको बाहर निकालना है नोट की सूरत में. कोई भी अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है. जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. यूज एक्सेप्टेबल अब्रिविएशन, जिसकी अभी बात चल रही थी, लाइक गवर्नमेंट आपको लिखना है तो GOVT, फीट आपको लिखना है तो FT, एटसेट्रा लिखना है तो ETC, रजिस्टर्ड लिखना है तो REGD. इनको आप बोलते हैं कीवर्ड्स, जो आप लास्ट में की लिखते हैं, की में आप लिखते हैं फिर नोट में कि इस वाले एक्सप्रेशन के लिए मैंने ये वाला यूज किया है एब्रिविएशन. इस क्योंकि एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने एब्रिविएशन यूज की है तो किन वर्ड्स के लिए यूज की है. एंड डोंट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक. यूज अप्रोप्रिएट इंडेंटेशन, दैट मीन्स स्पेसिंग फ्रॉम द मार्जिन लाइन. आपने देखा होगा कि जब हम नोट बनाते हैं तो उस नोट में पहला मिडिल वाला पार्ट लेते हैं, उसके बाद जो सब हेडिंग बन जाती है वो थोड़ा राइट साइड में जाती है, उसके बाद उसकी जो सब हेडिंग जाती है बिल्कुल जैसे स्टेयरकेस बन जाता है. अगर यहाँ पे हम माने मेन टॉपिक ये हो गया हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग इस जगह आ जाएगी, और सब हेडिंग की जो सब पार्ट्स है वो इस जगह आ जाएंगे, तो ये ऐसे स्टेयरकेस बन जाएगा ऐसे. This called indentation. This is the margin line. अगर यहाँ पे स्पेस कम थी, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. Because when you make that capsule, उसमें लगना चाहिए कि हेडिंग्स को अलग इंडेंटेशन है, उसके बाद सब हेडिंग्स की अलग स्पेसिंग है, और सब हेडिंग्स की भी अलग स्पेसिंग है. That means नंबरिंग का, इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा. Don't write lengthy sentences, elaborate sentences. Write only expressions. Write only the information that is required. Appropriate indentation. सबसे important point जब आपने नोट बना दिया, उसके बाद आपको रिव्यू करना है. रिव्यू में क्या करना है, एग्जामिनर क्या देखेगा? एग्जामिनर देखेगा जो आपने नोट बनाया है, क्या इस नोट में आपने तमाम पॉइंट्स पैसेज के इन्वॉल्व और इंक्लूड किए हैं कि नहीं. अगर आपने पैसेज के तमाम मेन पॉइंट्स को इंक्लूड और इन्वॉल्व किया है तो उसके बाद एग्जामिनर उन पॉइंट्स को पैसेज में ढूंढेगा, और एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि बच्चे ने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ा नहीं है. ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द नोट, एंड तमाम जो इसका मेजर जो नट्स एंड बोल्ट्स जो भी इस पैसेज के थे, those nuts and bolts have been addressed by the student. And if you have been successful, my dear students, in doing that,
5 marks are in the kitty. That is what examiner will see. That means इतने से बड़े passage को आपको इतने से छोटे कोजे में you have to squeeze the ocean into a pond. आपको बड़े से समंदर को छोटे तालाब में बंद करना है और उस तालाब में समंदर की बू आनी चाहिए. उस नोट में पूरे पैसेज की जो है वो बू आनी चाहिए. इफ यू हैव डन दैट देन इट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन, इट्स नॉट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इन fact it's a blessing in entirety for you, because examiner will have no option but to award you with the 5 marks that have been prescribed for this note. So inshallah क्या होगा कि इसके साथ मैं आपको नोट का जो सैम्पल डिस्क्रिप्शन में साथ रखूंगा और उस डिस्क्रिप्शन के नोट को आप बाज़ाब्ता तौर पढ़ेंगे, चेक करेंगे कैसे हेडिंग क्रिएट की गई है पैसेज का. जो भी ये पॉइंट्स हमने इस वक्त पढ़े, इसकी डिस्क्रिप्शन में जो नोट होगा सैम्पल नोट मेकिंग का, उस नोट को आप स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ जितने भी आगे पैसेजेस होंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के, वो भी आपको सप्लाई किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ नोट, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू. For any confusions and clarifications, you can always have your queries. As I have told you earlier, you can WhatsApp me on 9419350949. WhatsApp queries के लिए अगर कुछ गुंजाइश बच जाती है क्वेरी की, अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है. इसी को रिवाइज करें. अपनी नोटबुक्स में भी थोड़ा बहुत इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बट देन यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ note also. So inshallah, till the next time, it's a goodbye. Take care and stay blessed. I hope that this point was absolutely clear to you. 5 marks in the kitty for you. Have a great time ahead. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.